वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैंने आपको एक एक फ्रेज कैसे बना उसके बारे में बताया था। हमने एक एक लाइन के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस होंगे वो इकट्ठे बोले जाएंगे। तो डिक्टेशन शुरू की जा रही है। If I can spare the necessary time, I shall go to the head office tomorrow. Full stop. I shall do my best to induce the authorities to raise the rate at which we are to ensure Messrs. Morris and Moore's for bales of rags. Full stop. The rate should be higher because of risk of fire and damage to the rest of the cargo. Full stop. I shall be sorry to receive a refusal as the business is scarcely worth the worry and risk unless we secure a fair rate. Full stop. We have had numerous instances of loss on similar policies in the past. Full stop. I think we should have a due sense of the grave loss and injury which may follow a refusal to raise the rates on these risky packages. Full stop. Everyone knows how easily oily rags take fire. Full stop. तो ये थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स। इसमें आपने देखना है कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपने एक एक फ्रेज चेक करना है, एक एक लाइन की तरफ ध्यान देना है कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।